with zero at an angle theta to the horizontal. Are you getting it? V0 at an angle theta to the horizontal on an inclined surface making an angle phi such that your phi is less than theta to the horizontal. So theta to the horizontal on an inclined surface making an angle phi to the horizontal. So if in case if I happen to consider, students listen carefully, I'll draw the diagram and I want you only to derive it. It's an easy question, student. Please pay attention. ये तुम्हारा horizontal surface है, students. You look into it. This is what the horizontal surface is. Okay, this is what an inclined is. An inclined plane is given to you. Let us say that this inclined plane is at an angle phi with the given horizontal of the ground. Now, if in case if I happen to make a body to be projected at a velocity v0, forming an angle theta with the horizontal. Listen carefully. This is v0, and it is forming an angle theta with the horizontal. Do take care of this. This theta with the horizontal. So can you tell me what is the angle with the vertical it's going to be? Sorry, Theta with minus the, phi. with the inclined plane will be. So it will be theta minus phi. बस तुम्हें ये मिल गया. तो अगर ये बॉडी प्रोजेक्ट हो रहा है तो देखो इसका प्रोजेक्शन होगा इन दिस मैनर. वो लैंड होगा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर. एग्रीड. तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? You have to find out the time of flight and you have to find out the range of flight. I want you to prove, students. मुझे तुम्हें एक proof करके बता. मैं I'll give you the formula. चलो. मुझे चाहिए range का formula, students. I want you to prove this formula. All of you listen carefully. The formula for range is given by 2 V naught square cos theta sine of theta minus phi the whole upon g cos square phi. Now, can anybody answer for this? I repeat, a body is projected at an angle theta with a horizontal with a velocity v0, and the body lands on an inclined plane at an angle phi with a horizontal. Find out range. Students, use your instincts. Use your instincts. सिर्फ मैं concept बोलता हूँ, straightforward. Students, use the formulas what we had used it for horizontal, a body being projected from horizontal. Okay, use those kinematic equations, students, very clearly. Are you getting it? And also you try to go for the concept related to what you have learned it in your laws of motion. Students, laws of motion में तुम लोग ने inclined plane के ऊपर तुम लोग ने पढ़ा है कि अगर body को inclined plane के ऊपर rest करता है तो what are the forces acting, what is the acceleration down the inclined plane, where is the weight acting, where is the normal reaction force, all those things has to be taken care of. Try to get an answer of this now. See, students, and when you're getting the problems, they will give you only this information, that's all. And you have to find out. See, either you remember the mathematical formula, memorize this, and start solving problems, or you try to get the relation. How do you go about with it? Yes, Shreya, can you tell me anything? Sir, I'm trying. Okay.
I'll give you a hint, students. Let's see how many of you can get the answer. Students, कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ students? Yes, anyone? So in first case, you drawn the sin theta and cos theta components of the inclined plane, and in the second case, you drawn of that initial velocity. Yes, I've taken B0. I've taken theta with the horizontal. No? This is the horizontal. And I've taken theta minus phi with the inclined plane. Are you getting it? So I have two resolutions. I have to resolve B0 into two ways. One with respect to horizontal and one with respect to inclined plane. So just look at the first diagram. Don't you think so? The first diagram simply speaks about phi. This is the range of the, if I happen to go for the diagram, students, I can consider this as O, this as A. So guys, this becomes the range of the inclined plane. So this is range. What is cos phi in the first diagram? Cos phi is equal to adjacent upon hypotenuse. Agreed. If I happen to go for the formula for speed, distance, and time along the horizontal, students, so how do you go for it? What exactly the formula for range will be equal to? Range can be written in terms of x upon cos phi. If I want to find out, see, because I need to get the value of range. Students, मुझे range चाहिए. तो range अगर मैं subject बना दूँ, तो what exactly range I can consider? It's x upon cos phi, है ना?
X क्या है? Sir, it's horizontal because when the body has been launched, ध्यान से सुनना, when the body is launched along the inclined plane, students, at each instance, look over here, ये तुम्हारा inclined plane है, body जैसे जैसे launch होते जा रहा है, I getting it? जैसे this is an inclined plane and this is the horizontal. This is the horizontal. जैसे body launch होगा, students, can I say it's gaining some height? If I happen to go for the y-axis, it's gaining some height, but at the same time, it's gaining some horizontal distance also. अगर body यहाँ पे आता है, देखो, देखो ये horizontal distance हुआ और ये height हुआ. Now, if you see over here, the body is reaching over here. This becomes the horizontal distance and this is the height. Finally, when it lands, can I say this becomes the horizontal distance? Agreed? क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. तो मुझे horizontal distance x क्या होगा? So simple. We know that speed is distance covered by body per unit time. And this can be considered as time of flight. ये जो t है, exactly same identical formula जो हम लोग तो पहले यूज किया था. Speed is equal to distance upon time. तो distance को मैं कैसे लूंगा? V0 into t upon cos v. क्या ये रिलेशन क्लियर हुआ सबसे पहले? Yes. Now, when you carefully observe, I want my formula for range. Yes, range. Do I have cos in the denominator? Yes, I'm getting cos in the denominator also. It's only that this is square. That means V0 do exist. Yes, sir. V0 also exists. So students, तुम्हें करना क्या है? Sir, it seems like that कि अगर मैं यहाँ पे time of flight निकाल के यहाँ पे place कर दूँ, तो शायद time of flight का formula 2V0 cos theta sin of theta minus v upon g cos phi होगा. क्यों नहीं हो सकता है? और वो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा. Are you getting, students? तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया रेंज का, एक राइट एंगल ट्रायंगल सब बना के मैंने कॉस भी बता दिया, एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेन्यूज. रेंज को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, x अपॉन कॉस v. x को कैसे लिखा? v0 is equal to distance, speed is equal to distance upon time, so x is equal to v0 t. Now if I say v0, if I happen to try to resolve it with respect to the horizontal, I get it, that means with respect to the ground. तो ग्राउंड के हिसाब से मैं जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा सर? ये तो हो जाएगा v0 cos थीटा. ये क्या हो जाएगा? v0 sin theta. लेकिन my body is not going along the horizontal, my body is going along the inclined plane. Are you getting it? I have along the inclined plane making an angle of theta minus phi. If I resolve this, the answer is sunna. If I resolve this, what is the velocity along? What is the velocity along the inclined plane? v0 cos of theta minus phi. ये क्या हो जाएगा? v0 sine of theta minus phi. Do you have theta minus phi somewhere? Cosine of theta minus phi? Yes, I'm getting it. Think, and get me the answer now. One more diagram you can consider over here, students. When a body is made to project on the inclined plane, students, it will land at a particular point, students. So when it strikes the ground, students, at that time, what is the acceleration? Of course. Students, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है, students, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है, तो हम लोग ने ये वाला प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, students, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. कुछ याद आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. तो उस टाइम पे मैंने क्या बताया था? ये बॉडी स्ट्राइक होगा तो ये इसका रिजल्ट बन जाएगा. यहाँ पे भी अगर तुम रिजॉल्व करोगे तो ये होगा. ये तुम्हारा थीटा था. हम लोग ने क्या पढ़ा था? व्हाट एक्चुअली वी लर्नड ओवर हियर स्टूडेंट्स? इन दिस वी लर्नड इट, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इन दिस वी लर्नड इट that from ground to ground projection there is no acceleration along x-axis, but there is acceleration along y-axis is minus g. है ना? Yes, sir. एग्जैक्टली अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं सपोज इसका डायग्राम में ड्रॉ करूं, okay, one more diagram, suppose if I happen to draw it, and this diagram I'm picking up from where, students? I'm trying to pick it up from your laws of motion, Newton's laws of motion. So suppose if I happen to project a body along the inclined plane, agreed, at an angle phi.
with the horizontal. And when the body lands, suppose if I say the body is landing somewhere over here, which about our students, what is the acceleration we consider? So the acceleration means the weight of the body. Students, answers with now. The weight of the body is going to act vertically downwards. So can I say this is the acceleration exactly directed vertically downwards? Can I resolve this acceleration into two components or weight into two components? Why not? Why not? अगर इसी को मैं resolve करूंगा तो ये along y-axis or ये along x-axis. Which force or which acceleration causes the body to come down the inclined plane? G sin phi. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Inclined plane पे. हाँ स्टूडेंट्स, अगर वेट नीचे की तरफ लिया, ध्यान से सुनना, अगर वेट नीचे की तरफ लिया तो कौन सा फोर्स बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ लेके आ रहा है? mg sin थीटा. तो ये कौन सा है सर? ये एंगल फी है. तो व्हाट एग्जैक्टली दिस आई कंसीडर? सो द acceleration along x-axis. Acceleration along x-axis, students. Can I run this as g sin phi? Are you getting it? Are you getting it? Is Yes, it along negative x-axis or the positive x-axis? Sir, it's along negative axis. So can I say it's minus I cap? आया ना? yes, sir. Shouldn't समझ में आ रहा? Actually, it seems like that only one person. Shreya, you raised this, कि sir kindly to incline plane, and you're not responding at all. Shreya, are Sir, you I'm getting it? understanding. Yes, sir. Okay, तो हाँ तो बोलो ना साथ में, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. It's only this guy is only saying it. It's for everybody, even for Zia also I'm doing it. It's not only for the thing, but Zia never replies. He said I'm understanding. Zia, are you there? Yes, sir. Okay. So see acceleration along x-axis. What is the acceleration along y-axis? Can you tell me what is the acceleration along y-axis? Minus j cos phi minus j cap. Very good, very good. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो it will be what? Minus g cos phi j cap. Absolutely correct. Absolutely correct, boy. So now, can you find out range? So now a student says, sir, to find out range, I need to find out time of flight. I need time taken for the body to project along the inclined plane. यानी जब भी यहाँ से project होगा तो मैं अपना stopwatch शुरू करूंगा. जब भी body land होगा तभी उस time पे मैं stopwatch को बंद करूंगा. How do I find out time? If I get time, students, anyhow, if I get time, I will substitute back over here and get the answer for range. And students, what is the reason for me to give you all these diagrams? ये सारे अंदर के intermediate problems. Are you getting it? Any, I can resolve this vector into two components with respect to inclined plane, with respect to ground also. The acceleration down the inclined plane and vertical downward, students. So this is considered to be gx. This is gy. This angle is phi. Students, phi is denoted in this manner. This is phi, and this is theta. How do you pronounce this as? phi. Phi. Come on, now get it.
स्टूडेंट्स प्लीज थिंक मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए कैसे निकाला था? एनीबॉडी कैन टेल मी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए मैंने कैसे निकाला था? टाइम के लिए क्या किया था मैंने? कोई किसको याद है स्टूडेंट्स? एनी ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेंबर इट? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, एनीबॉडी? My students, Time of ascent plus time of descent. no, my dear, that was fine. I gave you one more relation, students. T equals under root 2h by g. My dear, that was only for free fall, vertical. Theta is 90. Oh, hello. Who's this? Oh, yes, sir. Huh? Who answered? Sir, I got confused. एक सेकेंड, तूने जो आंसर, ओके मुझे बता, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग ने निकाला था फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड? व्हाट्स द फॉर्मूला? 2u sin थीटा बाय जी आया Yes, ना? sir. हमने 2u sin थीटा बाय जी निकाला था, अभी थीटा को 90 डाल दे. Yes, sir. Are you getting it? So what exactly the answer will be? 2u by g. How did you find out time? See, there are two ways of doing it. अच्छा मुझे पता, टाइम ऑफ असेंट, somebody said it, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट के लिए मैंने कैसे निकाला था स्टूडेंट्स? क्या फॉर्मूला यूज किया था? गौरी, you said it, time of ascent, time of descent. Which formula you Yes. used to find the time of ascent? Basically u plus 80 किया था कि नहीं किया था? अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करना है स्टूडेंट्स, तो टाइम ऑफ असेंट, वेलोसिटी along y axis, aviation velocity along y axis, acceleration along y axis. Gauri, you answer, isn't it? Yes, sir. So time of ascent हम लोग नहीं, time of ascent का मतलब क्या? Time taken for the body to reach the maximum height. We consider in this case. Now when it reaches at the maximum height, students, what about its final velocity will be 0? Ayana? Yes, sir. What about its velocity along y-axis, students? Initial velocity along y-axis. ये थीटा को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो क्या लिखते थे हम? u sin थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? u by, हाँ? Yes, sir. What is the acceleration along y-axis for ground to ground projection? So can I say it will be minus g into t? So can I say time of ascent क्या आया मुझे? u sin theta by g. Agreed? Yes, sir. You sin theta. And then yes, and then time of descent is exactly. तो फिर दोनों को ऐड कर दो, तो total time of flight क्या होगा? 2u sin theta by g. And if in case I don't know about it, what exactly here said it. Did he said within the root sign? Then my dear, you are trying to go for height का relation. अगर तुम टाइम के हिसाब से, तो अगर मैंने थीटा को 90 डाल दिया तो वो तो वर्टिकल लिफ्ट हो गया सर. मैंने और एक फॉर्मूला बोला था स्टूडेंट्स. चलो चलो वापस. We'll go for this. Forget about it. To hell with this. Everybody to hell with this. Go for ground to ground projection. Not using this. Not finding out time of ascent. चलो. Not finding out time of ascent. I want direct answer. सिर्फ मुझे डायरेक्ट ये आंसर चाहिए. ये भी मैंने बताया था. I want this direct answer. I don't want you to find out time of ascent and then say time of ascent is equal to time of descent. Ground to ground projection के लिए I want this as the answer. तो क्या करोगे तुम? तुमने से ground to ground projection के लिए आपको time of flight चाहिए. तो सर देखो ना, बॉडी शुरू हो रहा है ग्राउंड से, बॉडी वापस ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है. यानी आपने बोला था जब भी दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया तभी आपने बोला था आप यहाँ पे स्टॉपवॉच को चालू करोगे, जैसे बॉडी यहाँ पे आ जाएगा स्टॉपवॉच को बंद कर दोगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज यू स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, यू आर कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन. Yes, there is a horizontal distance covered. I'm not speaking about horizontal distance. Horizontal distance will be range, but displacement is 0. So what did I use to get the formula?
Sir, we use the formula S is equal to UT plus half AT square. ये फॉर्मूला यूज किया था स्टूडेंट्स हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट के लिए टोटल टाइम, यानी जहां से शुरू करोगे और यहाँ पे आ रहा है। अब देखो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, इज द बॉडी डिस्प्लेसिंग अलोंग वाई एक्सिस? नहीं सर, ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा, ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होगा, ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगा। क्लियरली मैंने ऐसे समझाया था स्टूडेंट्स। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस? सर ये तो जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? सर ऊपर की तरफ जाओगे तो ये तो हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा। एग्रीड? Yes, ये sir. t is considered to be the time, लेकिन what exactly I consider? This is the time I'll consider in this case. I get it? Minus half into what exactly I consider will be in this case? GT. Yes, that means now if I happen to consider minus what is the acceleration of my axis is? G into t square. Can I take it on the other side? Yes. So can I say it's half g t square is equal to u sin theta into t? This is the total time. T will get cancelled. What is t? To u sin theta by g. आ गया तुम्हारा? ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, इसे कैपिटल टी लिख दिया। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, प्लीज sir. एवरीवन, श्रेया ये सब तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, एंड आई एम हैप्पी कि चलो तुम लेकिन समझ गए, और ये ज्यादा नहीं, इट्स नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट ट्रिकी। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा भी तुम यहाँ पे जानो तो आराम से तुम, अभी जैसे मैंने आंसर बोला तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, अरे सर यहाँ बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ पे टाइम चाहिए ना, तो चलो ना हम यहाँ से यहाँ पे लेते टोटल टाइम, तो फॉर्मूला तो वही आएगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आएगा एस इक्वल यूडी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी यहाँ से शुरू हो रहा है तो वापस ग्राउंड पे आ रहा है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सर वेलोसिटी, ये क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड है तो वेलोसिटी अलोंग विच, ये वाली वेलोसिटी लोगे ना तुम, ये वाली वेलोसिटी Yes, कौन सी है? sir. v0 sin थीटा या v0 sin थीटा माइनस v? v0 sin V0 थीटा। sin स्टूडेंट theta. दिमाग वैसे चलना चाहिए स्टूडेंट्स, you have to consider in that case, not try to crack it, get the time. लेकिन before going for that students, if you have maintained notes, और कहाँ पे ये formula नहीं लिखा होगा, तो please turn back to your projectile, go for ground to ground, या draw the small diagram somewhere where you have done all those proofs. वहाँ पे ground to ground ये बताओ एक छोटा सा diagram, और वहाँ पे ये formula लिख लो पहले, direct formula how to get it, and then come back to this. Hope you are getting Pratham, Arman. Pratham, are you getting it? Arman, are you getting it? No reply. Those who don't reply, I'm going to throw them out. Avneet? Yes, sir. Okay, very good. Pratham and Arman is not speaking at all. Ayan, Khan? अरे unmute कर Ayan. Text क्या कर रहा है? There's one more Ayan in Mira Road. Carol, is it clear? Yes, sir, clear. Okay. Dia, are you there? Dia, are you there? Jyoti Singh, Harshada, Yes, sir. Harshada, Dhruvi. Harshada is not replying. So I'm not getting reply from Harshada. I'm not replying from Ayan, one of the Ayan Khan ने reply किया. Arman reply नहीं कर रहा है. Pratham is not replying. What you said, Ayan, but it's still here. Acha, fine. Arman replied. Very good. Very good. What about you, Krisha, Meenu? Yes, sir. ये जो टेक्स्ट करते हो बहुत मेहरबानी करते हैं, है ना? Like that. बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है.
Seems like that. Sujit, Shubham, are you clear? Rishi? Yes, sir. Okay, fine. Yash, are you there, Yash? Argar? Yes, sir. Yash? No, not you. Oh, there's one more Yash. Yash P 21K 4089A. कोई दूसरा है क्या ये? Somebody else is there. Yash P, if you don't reply, you are not there in the lectures. Zia is always alert and attentive. Okay, Preet, very good. No, Preet, that is true. People who are not able to hear me, that means they have just entered. The parents think that they are there. He's there into the lectures, but he doesn't want to attend the lectures. He has gone back to sleep. He doesn't want to listen, nor even he sees anything. That is why I try to remove such kind of students. Now see, now he's back. Now he's back. जैसे मैंने उसको text किया ना कि you're not in the lectures, otherwise you will be out. Student C, Yash P Khargar. Can you unmute yourself, Yash? Now he's above Zia. Yash P Khargar, 4089A. If you don't reply, I'm going to throw out the lectures fast. Yash, are you there? हेलो। Yes, Yash. हाँ सर। तुम क्या कर रहे हो? तुम लेक्चर में हो ही नहीं करके. सर मैं एक्चुअली थोड़ा लेट उठा अभी, मतलब It's मैं fine, फ्रेश लेट होने गया लेकिन ना ही इसलिए। तुम सुन सकते हो ना ही मुझे देख रहे हो यार, ये क्या नहीं फिर सर, लेक्चर. अभी अभी से अटेंटिव रहूंगा। अभी मैं थोड़ा लेट उठा था इसलिए बाथरूम गया कोई था। प्रॉब्लम नहीं माय डियर, आई हैव नो प्रॉब्लम्स. अगर तुम 10-15 मिनट लेट भी आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं करते. आई डू टेक स्टूडेंट्स. मुझे ये चाहिए कि स्टूडेंट्स के अंदर सिंसियरिटी हो, तो दैट इज मोर देन इनफ. उतना सिंसियरिटी अगर है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. जी सर लेकिन मैं जी। मैंने एक सिर्फ टेक्स्ट डाला तभी उसके बाद तो रिप्लाई किया. दैट इज व्हाट नहीं ना. सर, अभी अभी मैं हाँ, बाहर आया ना तो मैंने आपका मैसेज देखा, मैंने फोन उठाया तो। ओके ओके फाइन. ओके, see students, he is a good boy. He told you that if you all wake up late doesn't matter. ठंडी है, सोने का मन करता है, doesn't matter. Okay, now students, now I'm going to speak out the answer for this. So students, please, enough of time. Students, now if I want to get the time of flight, so what I'll do, students, I've got the range, I've got the acceleration also, both these concepts I've got it, students. Now what I'll do, students, I'll try to find out using the formula S is equal to ut plus half at square. Students, I'm going to use this formula to get my answer, students. Now I'll go for displacement along y-axis, velocity along y-axis, acceleration along y-axis. Now when the body is starting from here and landing back, what exactly displacement will be 0? So what is the velocity along y-axis we consider? Velocity along y-axis will be v0 sine of theta minus t. Agreed? That's one. Agreed? Plus half
into acceleration along y-axis. What is the acceleration along y-axis? The acceleration along y-axis will be down the inclined plane. What is the acceleration along y-axis? Minus g cos phi. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Into t square. आ गया मुझे टाइम? Did I get the time? Can I take it back over here? So this will be half g cos phi t square is equal to v0 sine of theta minus phi. Cancellation. We consider in this case, sorry, this is t is there. Very sorry. Please students, velocity along y-axis v0 sine theta minus phi into t. Huh? Now this t will get cancelled. What exactly the time you are getting it in this case? H2 v0 sine of theta minus phi upon g cos phi. Can I substitute this time back over here to get the range? To get the range, students. So what's the answer for the range you're getting it? The answer for the range you'll be getting it is what? Capital R is equal to what? V0 upon cos phi into t, that is 2v0 sine theta minus phi. Agreed? Into 2 Yes. upon what? G cos it phi. Is this clear, students? ये जो तुम्हारा v0 है students, this is sorry, ये v0 cos theta होगा students. Very sorry, this is not v0, this is v0 cos theta students. The velocity along x-axis I'll consider now. Please, ये जो x-axis है ना, this is v0 cos theta, please. Into t. Can you get this part, students? Look at this. This is vx. The velocity along x-axis, please. The range is along x-axis. So what's the velocity along x-axis I'll consider, students? The velocity along x-axis will be v0 cos. यानी ये तुम्हारा vx है. ये ध्यान में रखना, students. That's why when you go for this is v0 cos theta. क्या ये clear हुआ, everyone? Yes, sir. Please, everybody listen carefully. That's why I made for these two diagrams. When I wrote down the formula for range, what exactly we consider? Cos phi is equal to x upon r. What is r is equal to x upon cos phi we consider? What is the horizontal distance? So the horizontal distance is the horizontal speed, that is vx, into the time taken. So what exactly speed along the horizontal? v0 cos t. Are you getting it? So that v0 cos t I've tried to put forward over here. So now if I happen to go for time, we consider. So time we can write down, substituting back time over here we consider. So now what's the answer will be? So the answer will be 2 times, see over here, 2 times v0 square cos theta sine of theta minus phi g cos phi cos square. Is this clear, students? Formula for range? Yes, sir. Shreya, is it clear now? Are you happy or not? Yes, sir, I got the answer. Very good. Very good. Please, shall I erase the students? इसको erase कर दूं मैं अभी? Yes, sir. Okay, Gauri, did you get it, Gauri? Sir, actually, I had a doubt that What the was it? formula for range which you have derived in respect with the second case or the third case. My dear, range is what exactly considers the distance along the horizontal. Yes, sir. Okay, so now if I say range we consider is equal to what? I'm trying to go for a relation between hypotenuse and this, ना? मैंने तो निकाला hypotenuse का आंसर. हेलो, ये देखो ना, cos phi का फॉर्मूला क्या? What is cos phi? Adjacent upon hypotenuse. मुझे क्या चाहिए गौरी? R चाहिए ना? Yes, sir.
तो cos phi क्या होगा? Cos phi is x by r. So what is r? X upon cos phi. So I'm finding out along the inclined plane only. I'm finding out range along the inclined plane. हाँ, लेकिन ये बात है कि x क्या है? Sir, x is the horizontal distance along the ground. Because before this I explained you कि जैसे body project होता है, it covers the distance horizontal. At the same time, it's covering a vertical height also. जैसे जैसे बॉडी आगे की तरफ जाता रहेगा स्टूडेंट, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, वर्टिकल हाइट भी कवर कर रहा है. तो व्हेन द बॉडी लैंड्स ओवर हियर, सी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ओवर हियर विल बी x. So now if I say what is the horizontal distance x, we know that speed is equal to distance upon time. So what exactly distance will be equal to? Speed along the same horizontal. Students, ये जो speed है, that is along the horizontal x, ground, into time taken, and that is the time of flight. तो हमने जो रेंज फाइंड आउट किया वो इंक्लाइन प्लेन का ही रेंज फाइंड आउट किया है, ना कि ये रेंज फाइंड आउट किया है. डोंट मिस्टेक इन दैट केस. हेलो, आई डिडंट फाइंड आउट दिस रेंज, आई फाउंड आउट दिस ओनली रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ओनली by using cos phi का relation. That's why I got cos square phi. Otherwise I wouldn't have got cos square phi because already एक cos phi था. ये देखो ना, already एक g cos phi टाइम का आया और ये already cos phi था r के हिसाब से. When you look over here, this cos phi was there और टाइम में cos phi आ गया. Very clear? Yes, sir. तो हम लोग ने जो रेंज निकाला है वो इंक्लाइन प्लेन का निकाला है, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से नहीं है. The range is not with respect to the horizontal ground we consider, it's along the incline. Sir, but the second and the third diagrams, then what are they showing? My dear, that is the velocity. Look over here now. I use the equation. Gauri, ये डायग्राम मुझे क्या बताता है? ये डायग्राम मुझे क्या कनेक्ट करवाता है? ये डायग्राम मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस in terms of velocity को कनेक्ट करवाता है. समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने ये डायग्राम किया. ये डायग्राम मुझे क्या बताता है? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मुझे बताता है. तभी जाके मुझे इसको करना पड़ेगा ना. ये मुझे कहां से आया? How did I get it? From here. Theta is with horizontal, but theta minus phi is with the inclined plane. Gauri, you're not trying to think. You're not trying to think. What is the reason for breaking up the diagram into n parts? Each and every diagram I'm utilizing it. Students, the first diagram I'm using it to find out range का relation. लेकिन जैसे मैं रेंज का रिलेशन लेता हूँ तो वहां पे आके मैं ब्लॉक हो गया, मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता हूँ. देखो ना, रुक गया मैं यहाँ पे, क्योंकि नहीं मुझे x का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड इनटू टाइम cos phi. मुझे टाइम पता ही नहीं है. फिर अगर मैं चाहता तो मैं दूसरा एक देता हूँ हॉरिजॉन्टल से थीटा के हिसाब से, तो ये मुझे हॉरिजॉन्टल यहाँ से मुझे v0 cos थीटा के हिसाब से चाहिए. फिर मैंने इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से मुझे so this diagram helps me to go for this. At the same time, when the body lands onto the ground, I need to go for the acceleration. Because the motion is along the inclined plane. So there is acceleration along y-axis we consider. And there is an acceleration along x-axis. So it's ground to ground projection में क्या हो रहा था? Ground to ground projection में क्या होता है? Acceleration along x-axis was 0. But now if I say landing on an inclined plane, what is the acceleration along x-axis? Minus g sin phi. What is the acceleration along y-axis? Minus g cos phi. So हर एक ब्रेकअप का डायग्राम का यूटिलाइज कर रहा हूँ. ये डायग्राम किस लिए यूज किया है? To find out distance. ये डायग्राम यूज किस लिए किया है? To find out velocity, initial velocity. Substituting back, I got time. Substituting back in time back over here, I got reach. गौरी, कुछ पता चला गौरी? Yes, sir, understood. I did a mistake. I should not draw this diagram. I should have told you directly कि ऐसा ऐसा होता है. मैं सिर्फ पहले hints दे रहा था कि क्या तुम ये डायग्राम के यहाँ से hints पकड़ सकते हो क्या? That's why I gave you this diagram. And whenever you need to think, students, when you start thinking in this manner, you'll get all sorts of answers. Can I erase it? अभी जब भी तुम डायग्राम ड्रॉ करो, when you see, अभी देखो ये तुम्हारा नॉर्मल डायग्राम है स्टूडेंट्स. अभी तुम जब इसका सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, जब भी तुम डायग्राम, ये तुम्हें डायग्राम, तुम्हारा आंसर क्या मतलब, ये दोनों का डायग्राम का मर्ज होगा. स्टूडेंट्स, एक होगा तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से तुम्हारा रेजोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स. One is to resolve with respect to the horizontal. And that is V0 cos theta, V0 sin theta. And then one you're going to resolve with respect to theta minus.
This is V0 cos of theta minus phi, V0 sin of theta minus phi. अब मुझे बताओ गौरी, अगर मैंने ये डायग्राम पहले बता दिया होता तुम्हें, तो don't you think so it's all jumbled up over here? Yes, sir, it is. है ना? That is why I broke up this diagram into n parts. Can I erase this? Shreya, now you satisfied, Shreya? Are you happy? Yes, sir. Thank you. Okay, most welcome. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ मैं? Yes, sir. Okay. Diya Joshi, you didn't reply yet. Diya Joshi, you didn't reply yet. Dhruv Kotian, are you understanding? Yes, sir. Okay. Now, if in case how the problems have been given students, इसी के अंदर तुम्हारा angle दे देते हैं, तुम्हारी velocity देते हैं, तुम्हें time of flight पूछेंगे, तुम्हें range पूछेंगे. अभी देखो students, कैसा था problem? ये था, ये inclined plane था, ये ऐसा था. चलो, अगर मैंने पूछा what exactly the height of projectile students, चलो, मैंने पूछा height of projectile students, क्या करोगे तुम? हाँ students, I want to find out height of projectile. तो क्या करोगे? This is the height of projectile. यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, this is the maximum height it has reached. Coming back over here, so this is the maximum height. How do I get it? Sir, हाँ बोलो. when we are calculating height, do we have to consider it in respect to the horizontal plane or the inclined plane? Both. Friends, देखो, ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा ये height plus ये वाला. That means if in case if I happen to go for it, this is what the height means. I can go for this part of it and this part. And तुम्हारा height is from the ground also, ना? Yes, sir. Ground height है ना? So I have to consider that also. So for देखो ना, H max, अगर मैंने, हाँ, ये अगर मैं feel लेता हूँ तो what exactly cos phi h is in upon hypotenuse. Are you getting it? And that will be yes, always the midpoint. ये जब भी projectile होगा ना students, ये वाला होगा ना, it will be always the midpoint of this part of it. ये वाला होगा. यानी ये range का आधा. Agreed? R/2. यानी ये क्या होगा R/2? Are you getting it? yes, sir. This is the horizontal distance. ये दोगे तो ये horizontal distance हो जाएगा x/2. ये total x है. Are you getting it? तो R/x Yes, का क्या है? तुम्हें ये height मिलेगा. Agreed? And then you have to go for this part of the height. That is the maximum height we can consider for projectile. yes, sir. Okay, students. And that is simple relation, students. You have to simply use your right angle triangle and you have to get the answer accordingly. And in this, students, you have only three things to keep in mind: time of flight, range, and height. That's all. Okay, students. Now, shall we proceed? Shreya, can I proceed further right now with your other next topic, circular motion? Shreya? Sure. I'm sorry. And I sorry, nahi, barobar hai. I'm happy that you asked. I'm happy that you asked. My dear, you should not be sorry. Okay. Okay, now listen carefully, students. When you speak about concept of, see one thing, Shreya, it was you who asked. Okay.
maybe somewhere or the other this question might be in for गौरी के दिमाग में भी ये शायद क्वेश्चन होगा, मिहिर के दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा इसके बारे में, लेकिन दोनों ने नहीं पूछा. The rest of the people, I'm not bothered about them because hardly they reply and they respond. तो उनको कुछ फर्क नहीं गिरता है कि हो या नहीं हो, उनको कुछ फर्क नहीं गिरता है. They are least bothered in studies. Okay, they're just sitting into the lectures because it's a compulsion कि एक timetable वहाँ पे दे दिया है, parents are monitoring it कि भाई तेरे lectures है, उठ उठ उठ, मम्मा सुबह से उठाती है, 6:45 बज जाता है, मम्मा पुश करती है, वो खुद बेचारी मम्मा उठती है 6:30 बजे तुम्हारे लिए, तुम्हें पुश करती है 6:45 बजे, फिर भी तुम नहीं उठते हो, 7 बजे फिर भी तुम नहीं उठते हो, 7:10 7:15 होता है जब भी उठते हो, उसके बाद में फिर ब्रश करने जाते हो, इतने लेजी हो जाते हो तुम. लेकिन तुमने मम्मा को कितने बजे उठा के रखा है तुम्हारे लिए? 6:30 से. शी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, शी डजंट वांट टू स्लीप. By this time you should be responsible to let the parents have, let mom have proper sleep. It's my responsibility that I should get up by myself, put an alarm accordingly. They're least bothered and they are sitting into the lectures, it's just by force. But you spoke it out, that's the only difference. तुमने पूछा, बाकी the other people didn't. पर अभी भी देखो ये सिखाने के बाद में रिप्लाई किसका ज्यादा आ रहा था, मुझे बताओ. तुम तीनों का आ रहा था. Nobody else was bothered. क्या हो रहा है? The least bothered, उनके साथ में हो या नहीं हो कुछ फर्क नहीं गिरता है. Okay, and I'm having a very clear transparency. Students, I have a very clear transparency. I'm not like that to be, I don't want to be like that to try to do in a different manner, whatever it is in front of you. If I see that the students are sincere enough, why not? So Shreya, no need to feel, okay? Bindas kuch nahi ka. Okay, students, now we go for circular motion. Let's see who can crack this question. Students, agar suppose मैंने question पूछा तुम्हें, since we're going for circular motion, and again students, it's a continuation of two-dimensional motion itself only. लेकिन ये तुम्हारा circular motion is a motion in a plane we consider, students. So now suppose if I say, if I happen to make a body to move down an inclined plane, students, और फिर उसको मैं roll कर रहा हूँ, students. ये है center of the circular path. This is the radius. और ये एक horizontal ground है, students. This is the horizontal ground. Now what am I doing, students? There is a hot wheel. Think as if, I don't know about it, whether you know what exactly a hot wheel is. एक कार है, students, एक टॉय कार है. उस टॉय कार को मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया, स्टूडेंट्स. ये टॉय कार को मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ. तो टॉय कार क्या कर रही है? पूरा एक सर्कुलर पाथ जा रही है, यानी मैंने पोजीशन ए से रिलीज किया, फिर वो बी पे आएगी, फिर वो सी पे आती है, और फिर वो डी पे आती है, यानी इट शुड नॉट लूज कॉन्टैक्ट. My question is, at what height or from what height the car should be released? At what height the car should be released from the ground so that the car does not lose contact. The car does not lose contact and will come out with a velocity at the topmost position as under root GR. देखो स्टूडेंट्स, कार पूरी यहाँ पे है तो नीचे की तरफ जाएगी, फिर यहाँ पे बॉटम पे है तो ऐसे सर्कुलर पाथ जाएगी. कांस्टेंट रेडियस, यहाँ से भी मोशन सर्कुलर है, यहाँ पे आ गया, लेकिन कार नीचे नहीं गिर रही है, इट्स इन कॉन्टैक्ट. क्यों कॉन्टैक्ट में है? बिकॉज इट्स गोइंग आउट विद अ सर्टेन स्पीड. यानी उसको एक सफिशिएंट हाइट दिया गया है, एक सफिशिएंट पोजीशन दिया है. अभी स्टूडेंट्स, अगर मैंने सपोज पोजीशन छोटा किया होता, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, अगर मैंने हाइट छोटा दिया किया होता तो वो नीचे आता, स्विंग होके वापस आता, इट वुड हैव ऑसिलेटेड. स्टूडेंट्स, अगर मैंने हाइट कम कर दिया होता तो मैंने एक प्रॉपर एक हाइट सिलेक्ट किया है so that the car will perform circular path along the circumference
of a particular arc we consider, and the car does not lose contact from the surface, and it comes out with a velocity under root gr at the topmost position. So my question to you is, at what height from the ground the car should be released so that it should attain a velocity of under root gr at the topmost position of circular path? Hope the question is clear to all of you all. क्या ये question clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Can anybody answer for it? Yes, anybody? Excuse me, sir. Yes, Polo. So are we talking about the maximum height to be released from or the minimum height? This only, no. H from point A. What should be from the ground? This is the height I wanted. At what height the car should be released? Maximum height. That means the maximum height the car so that it should attain a velocity of 100 gr over here. So can we use the concept of energy here? Very good. Who's this? Riya, you are answering. Gauri, you are answering. Sir, it's Shreya. Shreya. Acha, Shreya. Absolutely correct. Shreya, you are going bullseye. Very good. Absolutely correct. Go ahead. Yes, anyone? Can I solve it for your students? So is the answer pi by 2 times the radius? Very good. Very good. क्या बात है? See, students,
स्टूडेंट्स को समझ में आया? जिया, are you there? Yes, sir. Did you understand? Did I teach circular motion का CV? No, sir. And straight away gave first as a problem only to start off with the chapter? Yes, sir. And Shreya cracked it. Yes, sir. So where there is a will, there is a way. Yes, sir. Okay. Gauri, what about you? I want Gauri and Meher also to answer. Law of conservation of energy. What she said it is absolutely correct. Students, तुम चाहो तो इसका सर्कुलर मोशन से भी आंसर लेके आ सकते हो, लेकिन विदाउट सर्कुलर मोशन कैन यू सॉल्व इट? यस. तो उसने क्या किया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज किया है. थोड़ा सा ध्यान देके I'm giving you 2-3 minutes more. Students, the rest of the students also try to get it. Whoever gets it, and Shreya, if somebody asks you the solution, don't pass on the solution. Don't be naughty, okay? Let others get it. Try to get it. Gauri and Meher, come on, get me the answer. Vidya is there in there. Hey, somebody answered earlier also. Wait a minute. Acha, Shreya only has answered. Yes, anyone else? Students, enough time I've given to you. Now please pay attention, students. If in case I want to go for total mechanical energy, simple we consider using a law of conservation of energy. Students, can I say the total mechanical energy at point A will be total mechanical energy at point A? And students, you'll have done work per energy. So this is a work per energy done. Yes, sir. Complete हो गया ना students? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Just completed. हाँ, तो फिर वहां पे तुम लोग ने ये किया होगा ऐसे टाइप का कुछ भी क्वेश्चंस. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा सर? पोटेंशियल एनर्जी तो होगा सर, mgh तो होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 रहेगा. एग्रीड?
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh डैश, ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा, दिस इज h डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v whole square. Students, at point A, the kinetic energy will be 0 because the body is starting from rest. So now can I say it's mgh is equal to mg when it reaches at point D. So what is the position above the ground, students? The position of this particular car above the ground is twice the radius. Height is twice the radius, diameter, plus half into m into what is the velocity at point D? So v square है तो ये gr हो जाएगा. Agreed. Now what is half mgr plus 2 mgr? Half mgr plus 2 mgr क्या हो जाएगा? 5 by 2 mgr. Now when you see carefully, what I need to find out? Sir, आपको h चाहिए था. अगर मुझे h चाहिए था तो मुझे ये चाहिए. So this is equal to 5 by 2 mgr. Do you have any cancellation? Yes, sir. mg will get cancelled. What exactly the height will be? 5 by 2. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Yes, sir. So at what height the body should be released from the ground so that the body should not lose contact and the speed at the highest position will be under gr. Students, ये कार नीचे क्यों नहीं गिर रही है? Reason क्या है? कार नीचे क्यों नहीं गिर रही है? कि उसको एक sufficient speed है. एक sufficient speed है. अगर by chance, ध्यान से सुनना, अगर by chance मैं थोड़ा सा भी, अगर चलो इस ये maximum height है, इसके ऊपर ले जाओगे तो वो तो safe ही रहने वाला है. बॉडी गिरेगी नहीं, वो बहुत ही हाई स्पीड से चली जाएगी. लेकिन अगर बाई चांस मैंने इससे कम वैल्यू ले ली, स्टूडेंट्स 5 by 2 आर से मैंने थोड़ा सा कम हाइट ले लिया, तो क्या द कार विल रीच एट द टॉप मोस्ट? नहीं, कार शायद यहाँ से आएगी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आएगी, बी से पास होगी, शायद सी से भी पास हो जाएगी, सी से ऊपर तक थोड़ी जाएगी, लेकिन शायद या तो नीचे आएगी या तो गिरेगी, उसको एक सफिशिएंट स्पीड नहीं मिलेगी. So what exactly the minimum speed it needs to have it at the topmost position for it to complete the circle? To complete the circle, it needs under root gr. How do I get under root gr? When the body has been launched from a height of 5 by 2 r. And r is the radius of the circular path. Agreed? Students, clear hua? Can I erase this? Students, can I erase it? Hi, Anna. Yes, sir. Okay. इसी का एक एग्जाम्पल तुम घर पे भी करना, स्टूडेंट्स. ये एक एग्जाम्पल तुम घर पे करना. I don't know about it whether you'll do it or not, but try करना, students. Okay. एक छोटा सा अगर कोई bucket हो घर के अंदर, I'm getting it, and see to it that you do it in थोड़ा सा open space, okay, and you try to take a bucket and that bucket you fill up completely with water. पूरे bucket को पानी से भर देना, students. Okay. एक छोटा सा bucket लेना, बड़ा वाला नहीं, छोटा सा bucket लेना, okay, and fill it completely with water to its surface, okay, and hold it by the handle. See that the handle is strong enough, huh? नहीं तो एक्सपेरिमेंट करोगे और कुछ होगा तो चिल्लाएंगी मम्मा और तुम मेरे नाम पे बिल फाड़ोगे कि सर ने बोला था ऐसा करने के लिए. And what do you do, students? You know, you hold that particular bucket and you start revolving it. उसको swing करो. Students, bucket को swing करो और स्विंग करने के टाइम पे पूरे बकेट को एक वर्टिकल मोशन लेके आओ. यानी इफ यू होल्ड द बकेट, सपोज दिस इज अ बकेट, द बकेट एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इज एंटायरली इन्वर्टेड. ये हैंडल है, ये हैंडल तुम्हारे हाथ में है, तुम यहाँ पे खड़े हो, स्टूडेंट्स, तुम यहाँ पे खड़े हो और ये ग्राउंड है. So you give a sufficient velocity to this bucket, to the bucket at the lowest point, students. You've given a sufficient velocity to the bucket at the lowest point so that the bucket completes one full circle. जब भी bucket पूरा topmost position पे जाएगा, not even a single drop of water will fall. The bucket is fully filled up with what?
but not even a single drop of water will fall if you move with a sufficient velocity in the topmost position. But what should be the velocity? Under root g times r. R is the radius of the circular path. ये try करना. और जैसे तुम try करोगे ना students, you will start feeling थोड़ा सा, you will feel scared कि शायद पानी गिरना नहीं चाहिए. So what do? You will start moving your hand and deliberately try to gain speed at the bottom, very high speed, to see to it that you are still safe enough, and then you revolve. Yani students, to make sufficient speed be at the lowest position so that the bucket can complete one full cycle without falling. Now, have you seen the depth of well, students? Have you seen the depth of well, or a biker who's actually moving into a sphere of depth? Students, a biker who's going into a, एक तो depth of well है, डेथ ऑफ वेल अलग है और स्फीयर ऑफ डेथ अलग है. डेथ ऑफ वेल शायद तुम लोग ने सलमान का बेकार मूवी देखा होगा. ऑल मूवीज ऑफ सलमान आर थर्ड क्लास. ओके, दिस वन इज नॉट एट ऑल एन एक्टर ओनली. ओके, लिसन केयरफुली. वो जो डेथ ऑफ वेल तुमने देखा होगा तो तुमने शायद वहां पे ऐसा ऐसा था, और शायद उसके अंदर बाइक चलाता है कोई बंदा, है ना. दैट इज डेथ ऑफ वेल. He doesn't fall down. The entire biker is inclined, students, and a slope. This is a slope given to it. Whereas sphere of death is this. Science circuses वगैरह में तुम जाते होंगे, एक बड़ा सा sphere रखता है. Students, it's a huge sphere, not a smaller one. And there is a gate. The person opens the gate, और एक biker होता है, bike चलाने वाला होता है. He comes over here and he's on a bike and he's trying to move the bike. First, he gives a race to the bike, accelerator to the upper, the bike goes on swinging. It goes on swinging, goes on swinging. Once when the bike gets a sufficient speed, what happens? See the bike goes at the topmost position, but still he doesn't fall. ऊपर लेके फिर भी गिरता नहीं है, यानी उसको ऊपर एक sufficient speed है. वो कौन सी है? Under root g है. I was speaking about this. I was speaking about vertical motion. ये जो डेप्थ ऑफ वेल है ना स्टूडेंट्स, ये जो डेप्थ ऑफ वेल है, ये क्या मालूम है? एक टाइप का इंक्लाइन प्लेन हो गया, ऐसा है. और यहाँ पे तुम्हारा बाइकर हॉरिजॉन्टली जा रहा है. This is also one. This is also one. The bike is entirely horizontal, students. It needs to have sufficient speed. अगर by chance उसका स्पीड कम हो जाएगा तो नीचे स्लाइड होकर नीचे आ जाता है. This is also quite risky. This is also risky. अगर by chance बाइकर ऊपर गया, ध्यान से सुना, उसने sufficient velocity दिया. Students, बाइकर ने sufficient velocity दिया, लेकिन वो जैसे ऊपर पहुंचा and automatically suppose अगर by chance बाइक के अंदर फेलियर हो गया, टेक्निकल फेलियर हो गया, इंजन बंद हो गया उसके टाइम पे. At that instant, engine shuts down. Yes, Prashant, मेला डेप्थ ऑफ वेल होता है. तो क्या होगा? अगर इंजन बंद हो जाएगा तो बंदा पूरा नीचे वर्टिकली गिर जाएगा. And that is डेप्थ ऑफ वेल. फिर उसी के अंदर तुम देखोगे तो एक के अलावा फिर वो 4-4, 5-5 बाइक वाले आते हैं, मालूम है स्टूडेंट्स? The way they do it. Okay. So the person, one is moving vertical, one is moving diagonal, other is also, but without head-on collisions. उनका collisions भी नहीं होता है स्टूडेंट्स. और उनका पाथ कैसे चेंज करते मालूम है? एक बंदा हॉर्न बजाएगा. When they start horning, in that case, that's a sign to change the path. Prisha says car is also used. क्या बात है? देखा Prisha? सोच. Prisha, those people who are doing all these things, see, they know the chapter circular motion so properly. है ना? यानी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उनके पास में जाना चाहिए, है ना? मॉड्यूल लेके उनके पास में जाना चाहिए और सारे प्रॉब्लम्स उनके पास सॉल्व करवाना चाहिए. विशा से नहीं सर. हाँ सर, ऐसा क्या है? विशा, okay students. So now what exactly is circular motion, students? The circular motion, if you look over here, students, have written as the heading, it's a two-dimensional motion, students. Circular motion is a two-dimensional motion. Either the motion of a body can be along xy, you can make a body to move along yz, or you can make a body to move along zx. So it's a motion, it's a two-dimensional motion where the motion of a body is along the circumference of a circle or along an arc of constant radius. Either the body can perform circular motion along the circumference of a circle, or can it be along an arc also? Yes. So circular motion zaruri nahi ki body should have a complete circular path.
इट कैन बी, अभी तक हम लोग ने हॉट व्हील्स का लिया था, लूपिंग अ लूप, यानी कार को ऐसे बचा था। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इसको हम क्या बोलते हैं, लूपिंग अ लूप। जो डायग्राम मैंने दिया था वो एग्जैक्टली लूपिंग अ लूप स्टूडेंट्स तुम्हारे स्काई में भी होता है। आई डोंट नो अबाउट इट वेदर यू हैव वॉच्ड सर्टेन एयर शोज, एट टाइम्स मुंबई में भी होता है स्टूडेंट्स एयर शोज। नरीमन पॉइंट पे जाओ तो वहां पे भी एयर शोज होते हैं स्टूडेंट्स कभी कभार, जहाँ पे तुम्हारे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं ऊपर की तरफ और फिर ऊपर की तरफ से नीचे आते हैं, दे गो फॉर लूपिंग अ लूप, दे ट्राई टू लूप एंटायरली इनटू द एयर। तो वहां पे भी स्टूडेंट्स वो हॉट व्हील की जैसे होता है, पायलट पूरा उल्टा होता है लेकिन इट डजंट टॉपल इन दैट केस, द एयरक्राफ्ट डजंट लूजेस एनी काइंड ऑफ पोजीशन इन दैट केस, तो वो भी लूपिंग अ लूप है। तो इट इज अलोंग एन आर्क of constant radius. So that's what you have to keep in mind. Now, what exactly I've done? I've taken a certain plane of revolution. Students, मैंने इसका टॉप व्यू दिया है, मैंने ऐसे ऊपर से दिखाया कि पार्टिकल कैसे है, पी का मतलब पार्टिकल है स्टूडेंट्स। So what exactly है? The particle xy is a plane of revolution. व्यू कौन सा दिया मैंने? टॉप व्यू दिया है। Particle P is performing circular motion in counterclockwise direction. Students, counterclockwise का मतलब क्या? Can you tell me what is counterclockwise? Anti-clockwise. Very good. Anti-clockwise motion. Students, anti-clockwise motion में perform कर रहा है. The particle is more performing anti-clockwise motion. We consider. So, अगर the particle is performing revolution in an xy plane, where is the axis of revolution, students? So, axis of revolution will be along what? Will be along z axis. So, xy is a plane of revolution. Z we consider is the axis of revolution vertically upwards. This is particle P we consider. Agreed? Is this much clear, students? Yes, sir. Now, students, let us understand what are the terms associated. To go ahead with it, students, there are two kinds of terms which a student should keep in mind. अभी ध्यान से सुनना, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसी को अगर तुम्हें एग्जांपल लेना है तो सपोज यू टेक अ स्ट्रिंग स्टूडेंट्स, tie a stone to it. Everybody listen carefully. Take a string, tie a stone to it, and then you try to revolve it. Get it? Which can I say revolving the entire stone in a circular manner? Yes, it's in a horizontal plane. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी सोचो कि स्टोन यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा सेंटर है, समझ में आ रहा है? तो अगर किसी ने पूछा वेयर एग्जैक्टली द पार्टिकल इज, तो स्टूडेंट्स तुम अपना हाथ लंबा करोगे या तुम स्ट्रिंग को देखोगे तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन गया मेरा पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? व्हाट एग्जैक्टली पोजीशन वेक्टर ऑलवेज शोज इंस्टैन्टेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल कहाँ पे। अगर पार्टिकल स्टोन यहाँ पे है तो वो यहाँ पे हाथ दिखाएगा, अगर स्टोन यहाँ पे है तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये आर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। इट्स अ रेडियस और पोजीशन वेक्टर वी कंसीडर। Friends, are you getting it? What am I trying to put forward? Now I'm trying to put forward variables associated for a particle performing circular motion in a given plane. The first variable which I'm trying to put forward is your position vector, which shows the instantaneous position of the particle. It is also called as the radius vector. O is the center of the circular path. X is the frame of reference. I'll consider the reference line. Let us say the particle initiates its motion from B. It's set into motion. क्या इतना clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो जैसे पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट, जैसे पार्टिकल रिवॉल्व करता है, स्टोन यहाँ पे आया, स्ट्रिंग बंधा हुआ स्टूडेंट, स्ट्रिंग बंधा हुआ। अगर बाई चांस मैंने स्ट्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग को काट दिया तो क्या होगा? तो तुम तुरंत बोलोगे सर अगर आपने स्ट्रिंग को काट दिया तो सर स्टोन कैसे जाएगा? एनीबॉडी कैन टेल मी हाउ एक्जैक्टली स्टोन इज गोइंग टू गो? इफ आई So कट द, tangentially. वेरी गुड, इट्स गोइंग टू गो टैंजेंशियल। तो मैं एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। डोंट यू थिंक स्टूडेंट ये जो टैंजेंट है, कैन आई से इट्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस? हाँ, पैरेलल टू इट, तो कैन आई से इट्स अलोंग वाई एक्सिस ओनली। ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर वो कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। आया ना स्टूडेंट्स? यानी स्टूडेंट्स मैं ये जो फिजिकल क्वांटिटीज बता रहा हूँ देखो, आई एम टेलिंग यू व्हिच एक्सिस दे आर एक्टिंग ऑन। हाँ, बट ये सारे एग्जांपल्स कभी है? फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन व्हाट प्लेन? XY plane. And the particle is performing circular motion in what direction?
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ध्यान में रखना। तो विच आर द टैंजेंशियल टर्म्स? सर जैसे आप काटोगे तो बॉडी इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा? सर यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा. ऑफ कोर्स द बॉडी इज डिस्प्लेसिंग टैंजेंशियली. व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? सर यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होगा. ऑफ कोर्स द बॉडी इज गोइंग टैंजेंशियली. What is velocity upon time we consider? So it's acceleration. I can consider as tangential acceleration, which is acting 80. What exactly force into mass into acceleration tangential will be? So it will be force tangential. It's also acting along the same direction. Does the momentum also play a role? Yes, sir. The particle has some mass. It's going with certain velocity, so it will have some linear momentum, and that linear momentum is also along y-axis. Are you getting it, students? So see what all terms are we consider is, say, linear displacement, linear velocity, linear acceleration, linear force, and linear momentum. They're all acting along y-axis. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. यानी पार्टिकल जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, स्टूडेंट ध्यान से सुना, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या उस टाइम पे ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है एट दैट टाइम? यस. अगर पार्टिकल यहाँ पे तो एट दैट इंस्टेंट इट हैज सर्टेन एफ. अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा तो सब कुछ है, यहाँ पे भी होगा tangential, but it will be always along a tangent. अगर पार्टिकल यहाँ पे तो सीधा tangent, the tangent is along y-axis. So where are all these vector quantities acting? Which axis? Positive axis. ये कहाँ पे? Positive x-axis. So now, if these are the tangential terms which are acting along y-axis, but the particle is performing circular motion, that means if it's performing circular motion, so there has to be some angular terms. There has to be some angular terms. Example, if I try to put forward, the answers are, students, अगर particle P यहाँ पे है और particle P यहाँ से यहाँ पे चला गया, it's going along an arc. Agreed? It's going along an arc, and this is the center of the circular part. तो ये तुम्हारा radius vector था, students. तो यहाँ पे अभी particle आ गया, P reaches to P dash. Students, ये center है ना? तो ये देखो, ये सारे tangential terms यहाँ पे हो गए. ये सारे tangential terms यहाँ पे आ गए. जब भी पार्टिकल यहाँ पे, तो अभी टेंजेंशियल टर्म्स यहाँ पे चले गए. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो एंगुलर टर्म्स कहाँ पे है? सर एंगुलर टर्म्स आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस. ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, स्टूडेंट्स, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस. व्हिच आर दे? व्हिच आर दे? थीटा. व्हाट इज दैट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज अलोंग z axis. Then you have angular velocity, which is along z axis. Then you have angular acceleration, which is along z axis. Then you have angular momentum, which is along z axis, and that also positive z axis. Why positive z axis? Because the body is moving in anti-clockwise. So देखो यहाँ पे linear displacement, angular displacement, linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration, linear momentum, angular momentum, linear force, angular force, and that angular force is called torque. क्या ये clear हुआ, students? वो यानी a particle is performing circular motion, students. यानी सर आप ये बोलना चाहते हैं कि जब भी particle circular motion perform करता है, भले वो xy में हो, yz में हो, zx में हो, अगर particle xy plane में revolve करेगा, तो z will be the axis of rotation. Why not? अगर yz हुआ उसका plane of revolution, तो क्या x है उसका axis of revolution? Why not? अगर मैंने zx ले लिया है plane of revolution, तो क्या y है उसका axis of revolution? Yes. तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी एंगुलर टर्म्स है वो कौन से एक्सिस पे होंगे? अगर पार्टिकल xy है तो एंगुलर टर्म्स सारे z एक्सिस पे होंगे.
सारे एंगुलर टर्म्स z एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही होंगे। अगर ये प्लेन है और यहाँ से मैं अगर पेन पास करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर, सारे एंगुलर टर्म्स भी अलग हो भैया। Now, if in case if I say if the body is performing circular motion y z plane, so where exactly the angular terms are along x axis. If it's z x, along y axis. लेकिन क्या ये पॉजिटिव z होगा या नेगेटिव z होगा, वो कैसे पता चलेगा? एंगुलर टर्म्स along z axis, लेकिन को बता सकता है पॉजिटिव z और नेगेटिव z कैसे पता चलेगा? Anybody knows it? So depending whether it is in clockwise or anti-clockwise direction. Very good, Gauri. Absolutely correct. और ये बताता है कि इसका वेक्टर स्ट्रॉन्ग है. Students, have you done vectors from me? Students, did I do vectors with you all? No, sir. Sachin sir did. Okay, fine. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहाँ पे यूज होता है? So when the resulting quantity is a vector quantity. No, my dear. हाँ, fine, that is fine. लेकिन स्टूडेंट्स ये जो तूने आंसर बोला ना गौरी, it's all for cross products. स्टूडेंट्स ध्यान से रखना. Listen carefully. Cross product in vectors is always used in physics. Cross product of two vectors in physics is always used in which chapter? Circular motion and rotational motion. Students, तुम्हारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर, ये हमेशा 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 सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए होगा. अभी इसने जो आंसर दिया ना, गौरी ने जो आंसर दिया, वो क्या था? बॉडी वाज इट्स राइट एंड स्क्रू रूल था. स्टूडेंट्स, शी गिव एन आंसर फॉर राइट एंड स्क्रू रूल ओनली. शायद तुम्हें पता होगा राइट एंड स्क्रू रूल तुम लोग ने कहाँ पे पढ़ा है? क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है. अगर मैंने कोई बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया और ये आई है, ये जे है और ये के है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज आई क्रॉस जे? तो तुम बोलोगे प्लस के. यस, सिंस आई क्रॉस जे इज इक्वल टू प्लस के. ये किया है कि नहीं किया स्टूडेंट तुम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट्स में? Yes. जे क्रॉस आई क्या होगा सर? जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस के विल बी प्लस आई and k cross I will be equal to plus j. ये किसके लिए है? ये एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज के लिए. लेकिन अगर वही मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ स्टूडेंट्स, if I happen to go for clockwise, clockwise motion and circular, तो देखो मेरे आंसर्स चेंज हो जाएंगे. My answer will change. If I go for clockwise, then what exactly it is? J cross I will be minus k. I cross k will be minus j. And k cross j. फ्रेंड्स, क्या ये तुम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, पढ़ा है sir. सर. तो ये कहाँ पे सर्कुलर मोशन में तो यूज हो रहा है. स्टूडेंट्स, तुम्हारे सर ने जब एग्जांपल दिया होगा तो इसके एग्जांपल टॉर्क का एग्जांपल दिया होगा, सर्कुलर मोशन. यानी स्टूडेंट्स पूरे फिजिक्स में आंख बंद करके अगर कभी भी किसी ने भी पूछा क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर्स कहाँ पे यूज होता है इन फिजिक्स, तो आंख बंद करके बोलना स्टूडेंट्स, it is always used only for those kind of motions whether the particle is along the circumference of a circle, that is circular motion, or the body is rotating about its own axis. उसी के अंदर ही होगा. Linear motion नहीं, translational नहीं, nowhere over there. That will be only in circular motion and rotational motion के लिए बस, curvilinear motions के लिए बस. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे सारे एंगुलर टर्म्स कहाँ पे होंगे? z एक्सिस में होंगे. सारे एंगुलर टर्म्स will be along z axis. तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं स्टूडेंट्स, how exactly my terms are? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. My terms are my terms which are acting along x, y, and z. So which are the terms we consider students? I can put forward in terms of I cap, j cap, and k cap. Friends, along I cap, it is r bar, position vector.
Along with position vector, students, there are two more terms which I'm going to pick up in the next lecture. एक है students, ध्यान से सुनना, एक है तुम्हारा acceleration centripetal and force centripetal. So these are also two terms which are acting along I cap, acceleration centripetal, force centripetal. CP stands for centripetal, radially inwards. इसका मतलब क्या? Radially inwards. ये इसका मीनिंग सेंट्रीपिटल का मतलब, यानी ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्टिंग अलोंग आई कैप. जी कैप पे कौन से टर्म्स हैं तुम्हारे? सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, linear force, also called as tangential force. That is along J cap. K cap means we consider as Z axis, and that also I can go for positive Z. If it's anti-clockwise, positive Z, clockwise, so minus K. So which are the physical quantities over here? Say linear displacement है तो यहाँ पे angular displacement, linear velocity तो यहाँ पे angular velocity, linear acceleration तो यहाँ पे angular acceleration alpha, linear momentum तो ये angular momentum L, linear force and tangential rotational force, that is torque. Did you get an analog? Or students, did you get an identical terms? अगर कोई 100 मीटर रेस सीधा जाता है स्टूडेंट्स, 100 मीटर रेस सीधा जाता है तो वो 100 मीटर स्प्रिंट अलोंग स्ट्रेट पाथ होगा, तो दैट बिकम्स ए लीनियर वेलोसिटी. फ्रेंड्स, लेकिन अगर वही बंदा सर्कुलर ट्रैक में जाता है, 4/100 रिले लेता है, 4/100 relay race, you must be knowing it, relay race. In that case, what exactly is going with? Angular velocity. This is how we change the terms. These are linear terms and these are angular terms. Angular terms are always used for those kind of particles performing circular motion or rotating about its own axis. For example, Earth rotating about its own axis or a spinning top. Is this clear to all of you, first of all? Yes, sir. So I'll just brief it up, students. Circular motion we consider is a two-dimensional motion. It can be either along XY, YZ or ZX. If the body is along XY, where is the axis of rotation? Z. If it is YZ, axis of rotation is X. ZX, axis of rotation is Y. It can be motion along the circumference of a circle or along an arc of constant radius. Let us assume a particle to move in an XY plane. Are you getting it? And the particle is moving in anti-clockwise direction. Since the particle is going in an anti-clockwise direction, by using right hand screw rule, where is my thumb pointing? Where is my thumb pointing? It's going into your eye. It's going into your eye along positive z axis. So thumb के direction में क्या होगा? सारे angular terms. ये देखो, अगर मैं horizontal plane देख रहा हूँ, top view ले रहा हूँ, तो तुम्हारा ये top view मैंने दे दिया, तो where is the thumb pointing? Out of the cardboard. तो सारे angular terms will be along z axis. Tangential terms will be all linear terms. Are there any physical quantities acting along x-axis? Yes. If I happen to go for right hand screw rule, anti-clockwise direction, I'm getting all positive answers. Clockwise direction, I'm getting all negative answers. क्योंकि जरूरी नहीं है कि body is set to move in anti-clockwise only, students. Body can be made to move in clockwise also. लेकिन हम preferably anti-clockwise लेते हैं students. जितने भी celestial bodies हैं students, they all move in anti-clockwise. A simple example मैं पूछता हूँ students, do Earth rotate? हाँ students बताओ, do Earth rotate? आया ना? Yes. ये बताओ, अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट होता है? ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट होता है? वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? West to east. तुरंत आंसर है वेस्ट टू ईस्ट. कैरल ने आंसर दिया. कैरल, यू ओनली आंसर? Yes, sir. Okay. And before that, who answered? Before that, somebody answered, no? I answered. Yes, west to east. Students, it's so fast. Gauri has answered. Students, कितना fast answer मिला है. सोचा भी नहीं स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनको ये भी नहीं पता कि अर्थ कैसे रोटेट होता है.
Students, this is a sign of worry. अगर तुम्हें आंसर नहीं मालूम ना, shame on to you. You are not fit to be in class 11th and that also in science. I'm telling you on your faces. ये छठवीं और सातवीं के स्टूडेंट्स को पता है. Sun rises from east and sets in west. We are trying to rotate in the direction opposite. तभी जाके हमें फील होता है कि वो वहां से राइज हो रहा है और सेट वहां पे होता है. तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स. अर्थ इज गोइंग इन एंटी. अगर तुम्हारे घर पे भी ग्लोब होगा ना स्टूडेंट्स, अगर एक स्टडी टेबल पे ग्लोब रखा हुआ है, ग्लोब एक डेमो पीस रखा हुआ है अर्थ का छोटा सा, तो उसके ऊपर हाथ रखो स्टूडेंट्स, वहां पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट होगा और उसको ऐसे रोटेट करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ जाएगा. एंड दैट इज व्हाट पॉजिटिव जेन एक्सिस. सो ये क्लॉक रूल इसके लिए, सॉरी राइट हैंड स्क्रू रूल इसके लिए यूज हो रहा है. अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट. स्टूडेंट्स अभी तुम्हारे डैड जब न्यूज देखते हैं, द न्यूज, तो न्यूज का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ. ये है न्यूज, NEWS. अगर तुम कोई इंडियन न्यूज देखते हो तो उसका मतलब इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंडिया, ईस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया. दैट इज व्हाट न्यूज मींस. तो ये तुम्हारा क्या हुआ स्टूडेंट? सर्कुलर मोशन. I getting it? Rotational motion. So if a body is moving, so yes, do we have terms along x-axis? Yes. Position vector, centripetal acceleration, centripetal force. What exactly centripetal का मतलब? Radial inward force. Friends, do we have anything along y-axis? Yes. Linear displacement, linear velocity, linear acceleration, linear momentum, linear force. Same thing. Yeah, linear displacement, so angular displacement, linear velocity, so angular velocity. The word I'm using: linear, angular, linear acceleration, angular acceleration. Linear momentum, angular momentum, linear force, angular force, that is torque, moment of force. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Can I erase this? So 1 minute. Can I erase students? Excuse me, sir. Yes. Sir, is there anything called as parabolic motion? Parabolic is yes. We did it now, my dear. So what exactly kinematics was? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे Yes, sir. हो? Gauri. It was an equation of a parabola. Y is equal to EX plus or minus BX square and we derived it. अगर तुम्हें मालूम है तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम लोगों ने क्या डिराइव किया था? Y is equal to tan theta into x minus gx square upon 2 u square cos square theta. फॉर्मूला मालूम है ना प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राउंड टू ग्राउंड? Yes, sir. Yes, You have a sir. book in front of no, you have a book in front of you. Yes, sir. Just open that book. Just open that book and go for ground to ground projection.
अगर मेरे नोट्स तुमने मेंटेन किए होंगे तो मैंने लिखा होगा पाथ इज पैराबोलिक, प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ इज पैराबोलिक, और मैंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी दिया है. स्टूडेंट्स, पैराबोला कैन बी इट्स अ कप शेप्ड. अगर तुम्हारा माउथ इज फेसिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस स्टूडेंट्स, तो माइनस में आएगा तुम्हारा साइन. इसलिए हमारा इक्वेशन माइनस में आ रहा था, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आ रहा था, tan थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर आ रहा है. नेगेटिव साइन आ रहा है वहां पे, क्योंकि माउथ हमारा नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा था. अगर मैंने ऐसा दिखाया पैराबोला, माउथ पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर प्लस में होता. इट कैन बी अलोंग पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स ऑल्सो. रीड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. Did you get it, Gauri? Understood. Read the equation. What are you getting it? Oh, we have not given an equation of parabola. My dear, I am 110% I have given you when I have drawn the diagram. Diagram के ऊपर मैं y is equal to ax plus or minus bx square किया है, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने पूरा डिराइव भी किया है, और y is equal to tan theta x लिखा होगा. उसके नीचे मैंने ax minus bx square लिखा होगा. a को tan theta बताया होगा एंड b को दूसरा कांस्टेंट बताया. अगर तुमने नोट्स मेंटेन किया होगा तो, नोट्स मेंटेन नहीं किया होगा तो तुम्हें नहीं मिलेगा. And I know what exactly I've done. Not getting it, na? Sir, actually, whatever you wrote on the board, I did write it down in my notebook, but there's nothing about parabolic equation. My dear, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. या तो you have written incomplete information. मैंने पूरा, okay, is the equation of parabola written over there? Projectile motion के अंदर ground to ground, what is the equation written? Speak out that equation. Sir, no, like it's not in my notebook. Now you're saying it's not in notebook. तो किसके notebook में? So you have given it. My dear, if you're looking into the module, तो module के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ. Whatever I've written on the board, I'm speaking about that, my board work. Yes, sir, you had given equation of projectile. What is it? So y is equal to tan theta x minus half gx square upon u square cos square theta. Okay, और उसके नीचे मैंने ax plus minus b और a को ऐसा सर्कल बना के लिया है tan थीटा के साथ में. Yes, sir. A term is tan theta and the b term in dx square is half g upon u cos square theta. Yes. Shreya is very, very clear with this. Students, this is what I mean to say. Gauri, now you got it? That's an equation of a parabola. Okay, any equation जहाँ पे तुम्हें ax और minus bx square आ गया, that's an equation of a parabola. A degree 2. It's a kind of a quadratic equation. You'll be getting it. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर तुम यहाँ का मैटर नहीं लिखोगे, कोई प्रॉब्लम, I don't know about it, what exactly. See, I don't know about it, whether why somewhere or the other students, even Gauri might have written, she is not incorporated over there. That depends on to you. तुम्हें लिखना है नहीं लिखना हो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कैसे करना तुम्हारी मर्जी. But what are we doing? I'm trying to put, now if you look into the module, you will not get all these things. ये मॉड्यूल के अंदर सर्कुलर मोशन में ये भी नहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि वेक्टर्स में कर लिया है, लेकिन यहाँ पे इसका बहुत यूज होगा. और क्रॉस प्रोडक्ट्स के अंदर तुम सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है. विदाउट दैट हाउ कैन यू मूव फर्दर अहेड? Okay, students, in the next lecture we'll be continuing further, okay?